heart of rural India, amidst the sprawling fields, lies a complex challenge. Access to essential healthcare. 900 million people in the world's most populated country live in remote, underserved communities with limited access to essential health services. Despite making progress in reducing maternal mortality by over 75% in the last decade, India's public health system needs to address several urgent priorities. One out of every 10 women have an unmet need for family planning services. Over 2.5 million children are unvaccinated. 1 out of every 3 children are stunted or underweight. 2 out of every 3 cardiovascular deaths are premature. Nearly 400,000 people die of TB, accounting for the largest burden of global deaths. With 200,000 plus cases of dengue annually, India represents the world's largest share of cases. 500 million people are exposed to pandemic jump zones, and approximately 200 million people will become vulnerable to lethal heat waves by the end of this decade due to climate change. Despite the silent struggles, there is hope and optimism for India's public health system. And the reason behind that hope is Khushi Baby. To address these issues at the last mile, Khushi Baby is working hand in hand with community health workers and officials to build a new digital health ecosystem. Our vision is a resilient, data-driven health system in which every child, family, and village is supported to achieve happiness and well-being. In other words, Khushi. India has 1.4 million community health workers, the largest such workforce in the world. These community health workers face numerous challenges, from burdensome data entry procedures and unrealistic health targets to delayed remuneration. We realized that unlocking the potential of community health workers can lead to a large impact in health outcomes. So we identified the gaps, we understood the silos that existed within the digital health system. We have spent more than 200,000 man-hours in the field with frontline health workers to co-design a solution. And that's when the Community Health Integrated Platform, or CHIP, was born. It is a unified, offline, longitudinal application that is not just a tool but a companion for our frontline health workers. गावाना सोरन एवं हाल साल यो है कि टाइम टाइम आते खाबो खवाड़े और टाइम टाइम आते साफ सफाई जुलाड़ वहाँ पड़ो सब टाइम आते करावे तो नहीं अब ठीक है स्वास्थ्य में ठीक रहे बीमार था जते टाइम आते हॉस्पिटल ले जावे के हमने टीका कराड़े इलाज करवाड़े अब ठीक है बच्चे। पहले हाई रिस्क गर्भवती जब डिलीवर्ड होने जाती थी जब पता चलता था, और अभी है जो हम ऐप में काम करते हैं तो तुरंत हमको सारांश में हाई रिस्क है ये भी बता दिया जाता है और उनको हम रेफ़र भी करते हैं और आगे जाके महिलाएं चेकअप भी करवा के वापस आके हमको बताती है। Demo app is very helpful. We are having all the records and we are able to see what ANMs are doing and how they are referring the cases. पहले तो 2 दिन से तैयारी करते थे कि हमको रिपोर्ट में क्या क्या भरना है, क्या हमारा छूट रहा है, कुछ छूट जाएगा तो रह जाएगा, यूँ करके हम पूरा 2 दिन तक पूरा करते थे। मतलब कि एक दिन थोड़ा क्या, फिर घर का काम भी रहता है, थोड़ी देर घर का काम करते, फिर आंगनवाड़ी का सब करके फिर दूसरे दिन हम लेट तक बैठते थे, यूँ करके पूरा करते थे। अब तो बस हम ऐप पे खोलते हैं और खोलते ही हमारा पूरा डेटा निकल जाता है। Earlier, community health workers were working in silos on a mix of paper and digital systems. This technology, CHIP, provides a unified solution that brings together ASHAs, ANMs, and MOICs and allows them to track each patient's health longitudinally. CHIP's tremendous potential is improving and even saving lives.
ईश्वर नाम का लड़का था, ईश्वर सविता फतेहलाल। जो बच्चा जन्म के समय तो नॉर्मल वेट था, 2.5 किलो था उसका, लेकिन जैसे जन्म के बाद 3 महीने बाद उसका एकदम से वज़न 1 किलो पे आ गया और बच्चा बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो गया, जर्जर ढांचा बन रह गया था। एमसीएचएन पे हमारे विजिट करने के दौरान पाया गया कि वो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर है, 1 किलो वेट है उसका। तो फिर हम लोगों ने उसको ब्लॉक लेवल तक उसको उस डेटा को शेयर किया, हेडक्वार्टर शेयर किया, फिर उसको आरबीएस की टीम से टेक करवाया, यहाँ से उस जाडोल से रेफ़र करके उसको डिस्ट्रिक्ट एमटीसी वार्ड भेजा गया, जहाँ पर एक बार 13 दिन रह के वापस उसको रेफ़र किया, घर लौटा। दूसरे दिन 3-4 दिन बाद घर रह के वापस उसको बुलाया गया, वापस गया, तो 12 दिन तक कुछ और रहा वहाँ। उसके बाद उसका धीरे धीरे वापस उसके बॉडी में इम्प्रूवमेंट हुआ, वो एक सामान्य कंडीशन में वापस आ गया। मतलब उस घर पे अगर हम विजिट नहीं करते, अगर 1 या 2 दिन में अगर और देरी होती तो शायद वो ईश्वर आज नहीं बचता। बहुत यो बीमार हूँ, हालत अच्छा अंडी निकलेगी, कहीं नहीं हूँ। डॉक्टर सब आइया उदयपुर जाड़ो मोकलियो, जाड़ोल उदयपुर मोकलियो, दवाई ने गोली ने सब की दी। अब बात ठीक है, बच्चों रोटी खाए है ने सब हाव है, बात है ठीक हुई है बात, नहीं तो नहीं लन जाता डॉक्टर साहब ने, कई हालत नहीं है ने कहीं बे जाता मोड़े आदमी बीमार हो। Khushi Baby is also augmenting its approach to field visits with AI. The CHIP system uses AI to both prioritize the highest risk patients as well as turn the smartphone into a new diagnostic tool to detect anemia, undernutrition, TB, and urinary tract infections. It is not just a technology, it is a tech, team and tradition that allows us to make a difference at the last mile. We have a team of designers, software developers, data analysts, field monitors and policy advocates who work together to ensure the end-to-end deployment of this digital health platform. How can Ishwar's case be scaled to a population of 900 million people? Empowering health workers is one of the pieces to the puzzle. The other piece is leveraging this granular public health data collected by ASHA workers to inform data-driven decision-making at the local level and at scale. Health officials now have new tools to see village-level data on the multidimensional poverty index, areas where zero-dose children are living, or even driving times to the nearest hospital. They can use the dashboard for personalized and automated communication with health workers and community members to spread awareness and combat misinformation. इससे एफिशिएंसी बढ़ गई, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि पहले जब मैनुअल की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, उसके मार्फत से हमें चैनल हुआ करते थे। अभी इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, हम सीधे ही डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं इसके माध्यम से। तो निश्चित तौर पे इससे ग्रामीण के धरातल पे जो सेवाएं हैं मेडिकल हेल्थ की, हम प्रभावी रूप से उनको सुधार पाएंगे। We are encouraged to see the Ministry of Health invest $15 million in community health workers to digitally enable them on the CHIP platform at scale. We are already seeing the devastating impacts of climate change on health and their spillover effects on health inequities. Emerging pandemics make it more important than ever to have proactive and intelligent community health systems. Today, CHIP has already reached 70,000 ASHAs and impacted 45 million beneficiaries in India's largest state of Rajasthan. Every day, Khushi Baby is learning and innovating with their world-class partners to make the platform even more impactful for these remote, underserved communities. Like they say, it takes a village to raise a child. It truly takes one to raise a happy baby. Or as we like to call it, a Khushi Baby.